Hello friends, my name is Dr. Ashish Kumar Sharma and my today's topic is based on a basic religious topic, Srimad Bhagavad Gita. I'll explain few slokas, Hindi and English too. Let's start with the first shlok is Alasasya kuto vidya, avidasya kuto dhanam, adhrasya kuto mitram, amitrasya kuto sukham. Friends, its mean is आलसी को विद्या कहाँ, अनपढ़ मूर्ख को धन कहाँ, निर्धन को मित्र कहाँ और अमित्र को सुख कहाँ. Like as in English, if we talk in English, it includes efforts, knowledge, money and friends. If we talk about the efforts, if you do not put efforts, you cannot learn anything. And we are not talking about just bookish knowledge in a classroom with uniform and laboratories, even to be a great painter, mechanist, miner, athlete, dancer, car mechanic, or what you have. You need to put effort the learning of trade. Whatever you decide your trade, it's on up to you. It is on effort. And if we talk about the knowledge, if you go for a job, any kind, permanent or temporary, housekeeping at a hotel or a school teacher, the first question that is on a employer's mind is, what do you know? What do you know? And what can you do for him? Employers always want what can you do for him. Some are programmers, some technicians, some policymakers, some negotiators, some campaign managers, some maids, some plumbers, some doctors, some drivers. List is endless. Yes, my friend, list is endless, but they all are supported to know their job. Yes, my friends, they all are supported their job. And if we talk about the money is the basic part. Many good-hearted people, yes, my friend, many good-hearted people get an uneasy feeling. Yes, my friend, get uneasy feeling upon hearing the word money. Yes, money is not important. Mostly to those who have already acquired enough money. Yes, my friend, money is not important. Mostly to those who have already acquired enough money, at least to cover the basic needs and wants of life. Money should be acquire our basic needs and wants. After eating, most people do not feeling hungry, but that does not make food unimportant. It's a part of money. It's a thinking of people. Friends, now comes to the sticky part. How can we say that no money, no friends? Let's talk about the one story and can say one rule. Can say that when do you make friends? In childhood. Everyone had friends in childhood. When you did not earn or have money, you was not earning in your childhood. Mind was less complicated. Mind was less complicated without far-reaching evil plans. You enjoyed someone's companies and you were friends. You have already enjoyed the company of your friends. The second time you made friends was in grown-ups. When you become grown-ups, you made the friends. When you had something in common, job, hobby, apartment complex, gym, yoga, studio, you make the friends each and every time. And its correlated word is happiness. Happiness
This should not need any explanation. Yes, my friends, it's not need any explanation. We all want friends to talk and share life experiences. That is why we date, marry, join clubs and societies, through parties, etc. That is the real reason for success of Facebook, Twitter as well. We make the friends for that type of reason. Let's come to the next श्लोक. Next श्लोक says आलस्य हिम मनुष्याणा शरीरस्थो महारिपु नास्तस्यु मस्मो बंधु कृत्वा हिम नापसीदति. इट मीन्स मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य, लेजीनेस, उनका सबसे बड़ा शत्रु है. यस फ्रेंड्स, आपके शरीर में यदि आलस है तो आपका वो बहुत बड़ा शत्रु है. लेजीनेस इज द वैरायटी ऑफ ग्रेट एनिमी रिसाइडिंग इन आवर बॉडी. परिश्रम जैसा दूसरा हमारा कोई अन्य मित्र नहीं. वी हैव टू बिलीव ऑन आवर हार्ड वर्क, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं रहता. फ्रेंड्स, doing which, if you do the hard work, you will never be unhappy. Hard work is the best friend. This one is so obvious. What can elaborate? One can elaborate on this. We talk about the hard work. People believe in destiny, but destiny is separate from free will. Yes friends, destiny is separate from free will. Whatever you know, can control, can foresee, can plan for it. Destiny is explained by Lord Rama. Now Lord Rama comes here. Lord Rama, when going to forest, exile, we say it, वनवास गए थे भगवान राम 13 years के लिए, 13 साल के लिए. is the unknown factor which you could not foresee coming, which gives no indication of coming, and which you could not have controlled even if you knew once it came. यदि आपको पता भी नहीं रहेगा भविष्य में क्या होने वाला है डेस्टिनी में, आप उसको बदल नहीं सकते. इट इज अ रियल ट्रूथ. पातितोपि कराधाते रुक्तप्तेव कंदुकः प्रायेण साधुव्रत नाम स्थायिन्तो विपत्तयः. फ्रेंड्स, इट्स मीन इज, जिस प्रकार हाथ से पटकी हुई गेंद भूमि पर गिरने के बाद ऊपर की ओर उठती है. जब कोई गेंद को हम जमीन पर फेंकते हैं तो ऊपर आती है. इसी प्रकार सज्जनों का, अच्छे व्यक्तियों का बुरा समय सज्जनों का थोड़े समय के लिए होता है. इट मीन्स इज, we explain in English, the manner in which a ball thrown over the ground bounces back. The misfortune of the witches is momentary, short-lived. And the third श्लोक is उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मृगा. It means, explain it in Hindi, प्रयत्न करने वाला, जो व्यक्ति प्रयत्न करने वाला है, प्रयत्न करने से ही कार्य पूर्ण होते हैं, केवल इच्छा करने से नहीं. जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में, जिस प्रकार कोई शेर सोया हुआ रहता है, उसके मुख में मृग स्वयं यानी हिरन स्वयं नहीं प्रवेश कर जाता, स्वयं नहीं चला जाता. उसी प्रकार वन कैन नॉट अचीव सक्सेस
One cannot achieve success unless or until he make efforts, endeavors for it. One cannot achieve success unless or until he make efforts, endeavors for it. Just by desiring, nothing can be obtained, achieved. हम केवल इच्छा मात्र से ही हमारी चीज़ पूरी नहीं हो सकती, हमको उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, प्रयत्न करने पड़ते हैं। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में स्वयं हिरन प्रवेश नहीं कर जाता, शेर को भी प्रयास करना पड़ता है हिरन को खाने के लिए, एफर्ट्स करना पड़ता है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट श्लोक इज मूर्खस्य पंच चिन्हानि। मूर्ख लोगों के 5 चिन्ह होते हैं, गर्वो, दुर्वचनम तथा क्रोधस्य, दृढ़वादस्य, परवाक्य, ज्येष्ठ नादर। दुर्जन व्यक्तियों के, मूर्ख व्यक्तियों के 5 लक्षण होते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं मूर्ख व्यक्ति कौन है, उसके 5 लक्षणों से आप उसको पहचान सकते हैं। गर्व, अपशब्द, क्रोध, हठ और दूसरों की बातों का अनादर करना। यदि कोई व्यक्ति आपको दिखे तो गर्व करता है अपनी बातों पर, अपशब्द बोलता है, क्रोध करता है, हठ करता है यानी जिद्दी करता है, दूसरों की बातों या विचारों का अनादर करता है, तो आप समझ लीजिए वो व्यक्ति मूर्ख है। लेट्स एक्सप्लेन इन इंग्लिश। इडियट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द इडियट्स, फूल्स। 5 characteristic sign: pride, ego, abuse language, anger, stubbornness, argumentations, useless discussion, debate and disrespect for others' opinion, ideas and thoughts. Then you can understand the real idiot and foolish person. Let's come to the next slope is चिता चिंता समाप्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेषता सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। फ्रेंड्स, जिस प्रकार चिंता फिक्र चिता समान है, चिंता करते हैं, चिता और चिंता में मात्र एक बिंदु का फर्क होता है। जिस प्रकार हम चिंता करते हैं वो चिता समान होती है। चिता तो मरे हुए व्यक्ति को केवल एक ही बार जलाती है, परंतु चिंता व्यक्ति को बार बार जलाती है। द funeral pyre burns the dead body only once, but worries keep him burning through out of life. नमस्कार दोस्तों, आपने मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। थैंकिंग यू टू लिसनिंग मी। नमस्कार।